मैम ज्योग्राफी पढ़ाओगे क्या अभी आप? नहीं नहीं, ज्योग्राफी में तो ऑलरेडी 3 चैप्टर। अच्छा, एग्जाम में ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आए थे? यस मैम। अरे यार, चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये निकालो। मेरे पास खुद के पास आज बुक नहीं है, मैं एक बार वर्षा मैम को मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। मैम हिस्ट्री बता दिया, पॉलिटिकल। मैम अभी ज्योग्राफी पढ़ा दो। हाँ बेटा, हिस्ट्री चैप्टर मैम। मैम फर्स्ट सैटरडे को भी मैं ऐड हुई, उस टाइम आपने कहा बच्चों कोई ऐड नहीं हो रहा, इसलिए आपका छोड़ दिया। मैम आप हिस्ट्री एक सेकंड, पढ़ा एक दो मैम। सेकंड में। सरस्वती को ज्वाइन करना प्लीज। मैम कौन सा पढ़ाओगे मैम अभी आप? अनिशा अपने आप को स्पॉट से हटा दे। मैम सरस्वती को ऐड करो ना। मैम उसको ऐड किया मैम, वो रिमूव हो गई। रुको मैं करती हूँ। मेरे को नेम शो नहीं हो रहा है ना सरस्वती का। चलो मैम आज तो अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन रखते हैं, ठीक है। मुझे आपने अपने भाई बहनों की क्लास में देखा ही होगा, ठीक है। एंड अपना प्लीज कैमरा ऑन करो बेटा। मेरा नाम रिद्धि है और मैं आपको एसएसटी पढ़ाऊंगी अब। टिल द टाइम कोई चेंजेस नहीं होते हैं तब तक मैं आपको एसएसटी पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद एसएसटी में रही बात, अब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे ज्यादा, सॉरी हिस्ट्री और सिविक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर दूसरे चैप्टर्स के, ठीक है। मैं आपको उस पर्टिकुलर जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रीडिंग पे जोर देंगे। आज मेरे पास आपकी बुक्स नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर निकालो, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर निकालो। मेरे पास सिविक्स की बुक नहीं अभी। खरीदो बेटा, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी कल लेकर आऊंगी ना, मुझे वर्षा मैम देंगे कल। आज आज दे देंगे शायद वो। मैं बार बार रिमूव हो रही हूँ। रुको, हाँ ये हिस्ट्री है। सिविक्स, सिविक्स लिखा हुआ है बेटा, सिविक्स। सोशल एंड पॉलिटिकल। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, हाँ मैम ये निकालनी है। हाँ।
चलो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है इसमें? ऑन इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी, ठीक है। तो इसको रीड करना कौन स्टार्ट कर रहा है? विथल रीड करेगा? विथल रीड करो। गर्वित अपना माइक ऑफ करो। India is a democracy in the class sixth book will look at the key element of the democratic government. This includes people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. Equality is a key feature of the democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. It's good Suja, that we can all vote as equality of your country. Every Jan Sabah is standing in the line. क्या दिक्कत है तनिष्का? फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा है वो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा है वो, बीच में क्यों डिस्टर्ब करना होता है? नहीं पता है तो म्यूट रह के चुपचाप सुनो बेटा। Yes, go on, Kanta. It's your turn now. I will vote for a candidate who was promised to bring in pipe water your area. Well, we'll see you later, Kanta. Yes, namaste, sab. Namaste, sab. Gudia has been running fever and I have to take here to the hospital, but I will have to finish the work as about Saab's house first and ask for some advance at home. There have some of this. You will feel better, and when I get back in the evening, we'll go to the hospital. Okay. It's no wonder that Gudia fall it often the basti is never cleaned. Make sure to the corners properly equal rate. The story about being with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her Kanta, even higher employer Ashok Jain and Uttar Lal, your neighbor in a democratic country like India. All adults, irrespective of what region they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, and allowed to vote. This, as you have already read in class 6. The book is called Universal Adult Justice and is an ancient accept of all democracy. The ideas of universal adult questions is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community he belongs to, was one vote. Kanta is excited to vote the and happy, and she is equally to all of the other because each of them has one vote here. But as your day gone goes on, Kanta become less content
about what this quality really means. What is this? Make Kanta unsure. Let's take a look at a day in your life. See lives in a slum and 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 has a drain behind her house. Her, her daughter is sick, but he cannot take the day off from work because he needed to borrow money from your employer to take her child to the doctor. Your job at domestic help had here out and finally see a day by again standing in a long line. This line is front of the government hospital is unlike the one is the morning because most of the people standing in the artwork. Kanta is one of many people who live in domestic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal apart apart from being poor people is India experiencing inequality in the different way. Let's see what this mean by reading the two stories given below. Each of these is based on real real incidents in people's life and reflect the different kinds of equalities that exists in India. One the more common form of inequality in India it's the in the caste system. If you like in rural India, you caste identity in something that you probably learned or explained very young. If you live in urban India, some of you might think that no longer believe it's in case, but just look at this metropolitan so from a leading English newspaper, and you will see how important the insert of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indias. Now let us read a story about the expenses of a Dalit child attending school. You have already read about Dalits in the class 6 book. Dalit is a term that the so-called lower caste use to address themselves. Dalit means broken, and by using this word lower case and point pointing to how they were and continue to be discriminated. Om Prakash Valmiki, 1950 to 2013, is a famous Dalit writer. In his autobiography, Jothan, he writing, I had to sit away from the other in the classes and that to on the floor the mat run out before reaching the top. I sat on something. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right never the door. Sometimes they would beat me about without any reason. When he was in class 4, the headmaster asked us, ओके 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 ना सुनो, अब मेरी बात सुनो। आज तो बुक है नहीं। मैंने अभी गूगल से भी बोलने की कोशिश करी थी, मगर मुझे समझ में आ गया था आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है। ठीक है,
तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास आज बुक आ जाएगी, हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने फ्रेंड्स में ये चीज बोल देना कि रिद्धि मैम आपसे एसएसटी लेंगे, तो प्लीज आप अपनी क्लास टाइम पे ज्वाइन करो, क्योंकि फिर नाम शो नहीं होता है। ठीक है, तो क्लास टाइम पे ज्वाइन करोगे तो ढंग से सारी चीजें सुन पाओगे, क्योंकि मैं अब पकड़ूंगी थोड़ी सी स्पीड। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा, आप ऑलरेडी पीछे हो, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी ताकि आप बराबर आ सको। ओके, मैम अभी आप क्लास ही लोगे क्या? बस मैं क्लास लीव करवा रही हूँ बेटा, मैं सबको क्लास लीव करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बुक नहीं है अभी। आज एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया और चैप्टर की रीडिंग हो गई। ओके, कल से हम इस चैप्टर को ढंग से स्टार्ट करेंगे अगर मेरे पास बुक आ जाती है तो। ओके, तो आज आप लोग फ्री हो अभी थोड़ी देर के लिए? आप अभी फ्री हो थोड़ी देर के लिए? आप लोगों को अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो आप वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। और अपने फ्रेंड्स में प्लीज सर्कुलेट कर देना कि रिद्धि मैम आपका एसएसटी का पीरियड लेंगे। ओके मैम मैं हाँ आपको मैम। स्क्रीन शेयर करके बता सकती हूँ। हाँ मैम मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता सकती हूँ। बेटा, मगर आप लोग अभी सब जने अटेंडी हो। स्क्रीन शेयर तो मैं भी करना चाह रही थी, मगर फिर उसमें आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही थी जब मैं गूगल पे जा रही थी तो, और मेरे इसमें डाउनलोड भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, फाइल खुल नहीं रही है मेरी। मैंने क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी की बुक होती है, ऑनलाइन मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाता है, मैंने करने की कोशिश करी, मगर आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि विट्ठल रीड किए जा रहा था। अगर मेरी आवाज सुनाई देती तो विट्ठल रुकता ना, तो मतलब विट्ठल नहीं रुका तो उससे मुझे पता चल गया कि मेरी आवाज नहीं जा रही है। इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप गूगल ऑन करते हो ना तो आगे किसी को आपकी आवाज नहीं आती है। आया समझ में? तो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड डे। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। गुड डे।